Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to study a really important topic in the Hindu newspaper on 11th December 2021. That is, Bal Krishna Doshi wins top honor. So there was this article in the Hindu newspaper on 11th of December. 11th December को ना ये article आया था Hindu newspaper में, and this article said architect Bal Krishna Doshi will receive Royal Gold Medal 2022, which is one of world's highest honors for architecture. The Royal Institute of British Architects have announced this. And he has had a 70-year career. He has built over 100 projects. He's 94 years old, and he's been given this recognition for his lifetime of work. And he also said that he is pleasantly surprised and deeply humbled to receive the Royal Gold Medal from the Queen of England. What a great honor. So let us understand what this Royal Gold Medal is and who approves this medal and why it is known as the highest honors for architecture, and to whom this medal is given, what are the qualifications after which this medal is given. राइट तो कौन से क्वालिफिकेशन है जिसको कंसिडर करने के बाद ये मेडल दिया जाता है, ये भी हम पढ़ेंगे डिटेल में, और इस मेडल का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं. On this note, we are starting our lecture. इसी नोट पर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. Before that, here's a small announcement for all of you. Unacademy is going to, increase the prices of the plus subscription from 16th December. 3,000 rupees increase हो जाएगा 6 दिसंबर से. जो आपको प्राइस अभी 58,000 मिलता है, वो 61,000 में कोर्सेज आपको मिलेंगे. तो इसीलिए अगर आप इस प्राइस हाइक से बचना चाहते हैं तो 16 दिसंबर से पहले सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. टेक योर सब्सक्रिप्शन बिफोर 16 December. Okay, and do not forget to use the code ARPITA10 to get 10% of discount also. आपकी सब्सक्रिप्शन पर आपको easily 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये कोड यूज कर लेते हो ARPITA10. न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 15 दिसंबर. 15 दिसंबर से नए बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं और 2022 और 23 के एस्पिरेंट्स के लिए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं. तो फटाफट से 15 दिसंबर से पहले आप अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए. इसके साथ साथ अगर आप एक साल या उससे ऊपर का जीएस का या कॉम्बो का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 20 जीएस बुक्स भी मिलेंगी जो आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी हार्ड कॉपी. ऑल राइट, एंड हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट सेपरेट बैचेस हैं. तो अकॉर्डिंगली यू कैन टेक योर सब्सक्रिप्शन. द लिंक्स आर गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. लेट्स स्टार्ट. So the architect Balkrishna Doshi, he will receive the Royal Gold Medal 2022, which is one of the world's highest honors for architecture. ये architecture के लिए है. So this is important for prelims. They can write over here for art and culture or for creativity, for painting, etc. But it's for architecture. Buildings का structure जो design करते हैं ना architecture में, ये उसके लिए award को institute किया गया है. Now, when we talk about Balkrishna Doshi sir, he is 94 years old and so far he has built over 100 projects. And he has been given this recognition for his work, and this Royal Gold Medal now it is approved personally by Queen Elizabeth II. And this medal is given to a person or a group of people also. देखो, this is also important for prelims. They can ask you it is given only to an individual. No, it is given to a group of people also. ऐसा नहीं सिर्फ individual को मिल सकता है. अगर group है architecture में लोगों का, उनको भी दिया जाता है. Who have had a very important influence on the advancement of architecture. Okay, so to those people this award is given by England इस award को देता है उन लोगों को. And you have to remember who has approved this award. इस award को किसने approve किया है, ये भी point आपको याद रखना है. ठीक है, तो यहाँ तक point clear हो गया आप लोगों को. Now have you heard about a very important place, that is, write it down, the Shreyas Comprehensive School Campus. Have you heard about it? It's in Ahmedabad. ठीक है, ये जो कैंपस है ये अहमदाबाद में है. सो इन 1958-63 ये जो प्रोजेक्ट है ये किसने तैयार किया था, बालकृष्ण दोशी जी ने ही तैयार किया था. Okay, then in Ahmedabad, same place, there is, write it down, the Atira Guest House, very famous place, known for its architectural beauty. So this was also developed in 1958 by Balkrishna Doshi ji only. Then the Institute of Indology again in Ahmedabad. This building also, it consists of rare documents. This also has been built by Balkrishna Doshi ji. Ahmedabad School of Architecture, that also has been monitored by Balkrishna Doshi ji. And then we have the Ahmedabad Ni Gufa.
ओके, अहमदाबादनी गुफा जो है वो भी किसने तैयार किया है, वो उसका जो आर्किटेक्चर है प्रॉपर, वो प्लान बालकृष्ण दोषी जी ने ही किया था। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। सो दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट, ही इज बीइंग अवॉर्डेड विद दिस अवार्ड एंड ही डिजर्व्स इट। ठीक है, वो डिजर्व भी करते हैं इस अवार्ड को। So this was all for this Royal Gold Medal 2022 award. This is really important for prelims. Please do not miss this at any cost. ये काफी important है. All these awards and medals, you have to prepare them for prelims. Okay? On this note, we are wrapping up this session. 5 मिनट में हमने पूरा ये topic अच्छे से cover कर लिया है. These articles you can take a cut out from the newspaper, stick it in your register, and then make short notes over it like this. All right. On this note, we are wrapping up the session. Thank you everyone for participating in the class.